In the previous video, we have discussed some basic things, right? We have discussed about living things, non-living things. We have discussed about the various life processes, right? And we have discussed about nutrients, food. हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड में से मिलती है. ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस की थी. In that video we have already discussed about the nutrition. So nutrition means what, students? It is a process of obtaining the food by an organism and utilizing for its growth and development, or we can say the repair of the body, right? In the previous video we have already discussed there are two modes of nutrition. How many types of nutrition? How many modes of nutrition? Two modes of nutrition, that is autotrophic and heterotropic. Auto means what? Self, and tropic means what? Nutrition. So autotrophic means what, students? Self nutrition, right? It means the organism which can prepare their own food, while heterotropic means what? They are dependent on the others for the nutrition. Clear? Let us start nutrition in plants. So how plants prepare their own food? So the most of the plants possess autotrophic mode of nutrition. Now autotrophic mode of nutrition, it means what, students? They can prepare their own food. So plants, generally green plants, are prepare their own food by one process that is called photosynthesis. यहाँ पे मैंने एक word जो है वो रेड कलर के अंदर लिखा हुआ है, that is called photosynthesis. So now let us understand this word. What do you mean by this word photosynthesis? ये वर्ड जो है वो दो वर्ड का बना है. एक है photo and second is synthesize. Now photo means what? Light, and synthesize means what? To prepare. So the plants are prepare their food by using the sunlight. Now you can see in the figure, the plants are obtaining the light energy from the sun. Sun में से वो क्या करते हैं? Light energy को obtain करते हैं. They are also absorbing the water from the soil. Soil में से वो जो plants के roots है वो क्या करते हैं? पानी को absorb करते हैं. They are taking in carbon dioxide, right? And they are making their own food. Clear? So photosynthesis means what? It is the process by which plant prepare their own food, right, in the presence of sunlight and other raw materials. सनलाइट और रॉ मटेरियल्स कौन से? जैसे कि वाटर है, सॉइल में से वो मिनरल्स ऑब्टेन करेगा. ये सारे रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके क्या करते हैं? प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, स्टूडेंट्स. क्लियर? और ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं. सो लेट अस डिस्कस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन डिटेल. नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, right? So process, it is a process by which green plants prepare their own food in the presence of sunlight. So यहाँ पे समझना स्टूडेंट, this is the definition of photosynthesis process, in which मैंने जो दो words है वो रेड कलर में लिखे हुए. Sunlight means the sunlight is necessary for the photosynthesis process, and green plants. Now, all the green plants can perform photosynthesis process. Why? Because green plant contains one pigment that is called chlorophyll. Green plant के अंदर क्या होता है? एक pigment होता है which is called chlorophyll, और जिसकी वजह से plants में जो leaves होते हैं उनका कलर क्या होता है? green होता है. Now this chlorophyll is necessary for the photosynthesis process. Clear? So where this process takes place, right? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पे होती होगी? सपोज आप अपने घर में खाना बनाते हैं, आपकी मम्मी आपके घर में खाना बनाती है तो कहाँ पे बनाती है? वो किचन में बनाती है, ना कि मेन रूम में बनाती है, ना कि बेडरूम में बनाती है, राइट? वो खाना कहाँ पे बनाती है? किचन के अंदर बनाते हैं, राइट? सो यहाँ पे भी प्लांट्स के अंदर तो बहुत सारे पार्ट्स है, स्टूडेंट्स, जैसे कि रूट्स है, स्टीम है, लीव्स है, राइट, फ्लावर है. तो ये फूड जो है वो कहाँ पे बनता है? तो it take place in the leaves of the plant. So photosynthesis process takes place at where? In leaves, right? So वो खाना कहाँ बनाते हैं? leaves में, right? Why? Because leaves contains what? green pigment that is known as chlorophyll. Clear? That's why the leaves are called kitchen of the plant. इसलिए plants का
किचन किसको कहा गया है, लीव्स को कहा गया है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नाउ photosynthesis raw materials, it means what? In the process of photosynthesis, which are the raw materials are required to prepare the food by the plants. For example, अगर आपको टी बनानी है तो टी बनाने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स? मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, देन टी लीव्स चाहिए, राइट, वाटर चाहिए. सो ये सारे क्या है? रॉ मटेरियल्स है जिसकी हेल्प से आप क्या बना सकते हो? टी बना सकते हो. द सेम वे अगर प्लांट को अपना खाना बनाना है तो कुछ चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट चाहिए, नेसेसरी चीज़ें उनको चाहिए. सो विच आर दी थिंग्स दैट रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस? दैट इज़ फर्स्ट, ये खाना कहाँ बनता है? हमने अभी पढ़ा लीव्स में. वाई? बिकॉज लीव कंटेन्स व्हाट? पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. सो फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल. क्लियर? ओके, नाउ ये जो प्लांट्स है जो अपना खाना बनाते हैं वो किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं. तो सेकेंड थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस इज सनलाइट. क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड इज water, right? If we are not giving water to the plants, then plants cannot perform photosynthesis process because they cannot absorb the water from the soil. अगर आप plants को soil पानी नहीं दोगे तो वो क्या होगा? धीरे धीरे सूख जाएगा. Clear? And the last one is it takes the carbon dioxide from the air. So basic 4 things are necessary for the photosynthesis process, that is chlorophyll, sunlight, water, and it takes the carbon dioxide from the air. Clear? So these are the raw materials which are used by the plants to prepare their own food by using which process? Photosynthesis process. Clear? Now let us understand what is going on in the plants during the photosynthesis process. So we are going to understand what is chemically happen in the plants during the photosynthesis process. So as we discussed, which are the requirements for the photosynthesis? That is chlorophyll, sunlight, water, and carbon dioxide. These 4 things are required for the photosynthesis process. Now let us understand the equation कि केमिकल प्रोसेस के अंदर उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दरमियान उसके अंदर क्या क्या होता होगा. सो अभी हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मीन्स व्हाट? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, राइट. सो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? एटमॉस्फेयर में से एब्जॉर्ब करता है प्लांट, और दूसरा क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है. सो नाउ यू कैन सी दिस इक्वेशन, अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है एयर में से और वाटर कहाँ से लेता है? सॉइल में से. सो नाउ दिस एरो इंडिकेट्स इट गिव्स, तो यहाँ पे उसको रिजल्ट में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स इज अ फूड ऑफ द प्लांट्स, राइट. सो द प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और during this process lots of energy is released, right, and also it release the oxygen. Plant release the oxygen, इसलिए आपको बोलते हैं कि grow more trees, trees ज़्यादा से ज़्यादा grow करो. क्यों? क्योंकि प्लांट आपको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है. तो ये इस तरीके से प्लांट आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्लांट्स क्या करता है? जब भी अपना खाना बनाता है तो वो साथ साथ में बाहर का एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑब्टेन कर लेता है और आपको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, राइट. सो दिस इज़ द इक्वेशन. और वो किसकी प्रेजेंस में होता है ये सारी प्रोसेस? सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यही इक्वेशन को हम केमिकल फॉर्म में, केमिकल इक्वेशन फॉर्म के अंदर लिखेंगे. सो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल है CO2. वाटर, दैट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज व्हाट? H2O. It gives carbohydrates, that is simple carbohydrates is known as glucose, and formula of that glucose is what? C6H12O6, plus it release energy and it also release the oxygen, that is O2. Clear? So I hope आपको ये photosynthesis process क्या है वो पता चल गया होगा. What do you mean by photosynthesis process, student? It is the process in which plant prepare their own food using sunlight,
water, carbon dioxide and chlorophyll. Clear? Now, as we discussed, during the photosynthesis process, the plant prepare their own food in the form of carbohydrates. Plants क्या करते हैं, जो खाना बनाते हैं वो carbohydrates form में होता है. So this is the first point, that is, as we know that during the photosynthesis, plants prepare their own food in the form of glucose, right? Now, so this glucose, and during the photosynthesis process it also releases the oxygen. So this glucose is converted into starch. ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट? स्टार्च के अंदर. अब ये प्लांट के अंदर जो फूड स्टोर होता है, दैट फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. यहाँ पे समझना स्टूडेंट्स, ग्लूकोज और स्टार्च में कंफ्यूज मत होना. प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज के फॉर्म में वो खाना बनाते हैं, लेकिन स्टोर कौन से फॉर्म में करते हैं? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट? सो इसलिए यहाँ पे मैंने रेड कलर के अंदर लिखा हुआ है कि फूड prepared is stored in the form of starch. Clear? I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. So presence of starch in leaves which indicates the occurrence of photosynthesis, right? So starch, leaves के अंदर जो starch present है, जो बताता है कि ये प्लांट एबल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए. Clear? Okay. So this is how the plants prepare their own food by using photosynthesis process. अब ये photosynthesis process में आपने देखा कि plants क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन. जैसे कि हम ब्रीथिंग करते हैं, जिससे हम सांस कहाँ से लेते हैं? नोज़. हमारा नोज़ ब्रीथिंग सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? नोज़ से, राइट? सो वी ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. सो प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है. तो वो कैसे होता है? दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो कि हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स. आई होप you like this video. Thank you.